Hello everyone. In previous class, we have discussed about measurement of precipitation using recording type rain gauges and non-recording type rain gauges. In today's class, we will discuss about other methods of measurement of precipitation like radar, telemetry rain gauges, satellite, etc. So, rain gauges are the direct method of measurement of precipitation. The rain gauges provide rainfall data directly, while the radar and satellites are the indirect method or the remote method of measurement of precipitation. So we have already discussed about the working principle of recording type rain gauges and non-recording type rain gauges. So I will start from the telemetry rain gauges. So what is telemetry rain gauges? Telemetry rain gauges are sophisticated instruments that measures the rainfall and transmit the data to the remote location for the further analysis and the monitoring of data or rainfall. तो टेलीमेट्री रेन गेजेस जो हैं ये जनरली एरियाज में यूज किए जाते हैं जहाँ रीच नहीं होती है, लाइक माउंटेनियस एरिया एंड इनएसेसिबल एरियाज जहाँ आप फ्रिक्वेंटली विजिट नहीं कर सकते हैं. In those places we use the telemetry rain gauges. So telemetry rain gauge consists of main four components. First one is collector, another is a rain gauge. So telemetry rain gauge uses the recording type rain gauges, mainly tipping a bucket rain gauge. Then data logger. Data logger consists of a sensor, batteries, etc. And this one is the solar panel. तो जो टेलीमेट्री रेन गेजेस हैं, सिंस टिपिंग बकेट यूज हो रहा है इसमें, बकेट्स विथ दी कैपेसिटी 0.25 mm. तो जैसे ही एक बकेट फिल होगी, ये एम्प्टी होगी वो बकेट, एंड उस बकेट के एम्प्टी होने पर जो कोरेस्पॉन्डिंग सेंसर है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेगा एंड डेटा लॉगर इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करेगा डेटा में and data will be transmitted via either radio or satellite or the cellular network. And जो data transfer हुआ वो further use होगा for the any analysis or the prediction. और तो ये था telemetry rain gauge का principle कि किस तरह से ये work करता है. Next one is radar measurement of rainfall. तो radar measurement rainfall में क्या होता है? ये radar है. इस रेडार से कुछ रेडिएशन इमिट की, जो रेड कलर हाइलाइटेड द इमिटेड और द आउटगोइंग रेडिएशन, एंड ब्लू वन इज द रिटर्निंग रेडिएशन. तो क्या होगा, जो आउटगोइंग रेडिएशन है ये एटमॉस्फेयर में अवेलेबल रेन ड्रॉप या स्नोफ्लैक्स हैं, इनके साथ में स्ट्राइक आउट किया एंड स्ट्राइक करने के बाद में कुछ स्कैटरिंग हुई एंड some radiation will go back to the radar. So based on the returning wavelength, radar computes the precipitation. So basically returning wavelength or returned wavelength are used to gauge the intensity of rainfall, and the intensity of rainfall is integrated with the time to gauge the precipitation. So this was the how radar works for the measurement of the rainfall. तो meteorological radar होते हैं, ये ऑपरेट होते हैं 3 to 10 सेंटीमीटर की वेवलेंथ में, एंड जो 10 सेंटीमीटर की वेवलेंथ होती है यूज ड्यूरिंग दी हैवी रेनफॉल, जिससे फ्लड हो सकता है, ऐसे रेनफॉल में रेनफॉल को के मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है. while for the light rainfall and for the snowfall the 5 centimeter wavelength are used. And the hydrological range of the telemetry rain gauge are 200 kilometers, while the aerial extent of the radar it's up to 1 lakh square kilometers. So radar provides the continuous spatiotemporal rainfall data for a particular aerial extent or for the extent of 1 lakh square kilometer. So this was all about radar measurement of rainfall. Next one is the satellite measurement of rainfall. So when we were using the rain gauges were providing the data for a particular location. In case of radar,
we were getting data for the particular areal extent. But in both cases, some part जो है वो skip हो रहा है, मीन्स कुछ पार्ट के लिए डेटा कलेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस गैप को फिल करने के लिए सैटेलाइट मेजरमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। सैटेलाइट मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल के लिए जनरली वी माउंट द रेडार टू द सैटेलाइट। अब जो इनएसेसिबल एरियाज हैं लाइक oceans हैं, we can't install the rain gauges or the radar in the ocean, but we can measure rainfall data over the ocean using the radar mounted satellite. So was the main purpose of satellite measurement of the rainfall or satellite based radar measurement of the rainfall. एंड जो सैटेलाइट मेजरमेंट ऑफ द रेनफॉल है, ये किसका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह से है, जो रेडिएशंस है सैटेलाइट या रेडार से जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं वो स्ट्राइक आउट करती है क्लाउड्स में। क्लाउड्स वेरीज स्पेशली एज वेल एज टेम्पोररी। तो जो रेडिएशंस आ रही हैं फ्रॉम द रेडार ये कंप्लीटली पेनिट्रेट नहीं होगी क्लाउड में, सो ये ग्राउंड सरफेस तक भी इसका रीच नहीं होगा। सो द रिमेनिंग रेडिएशन विल बी गो बैक टू द रेडार एंड बेस्ड ऑन द क्लाउड टॉप प्रॉपर्टीज एंड जो रेडिएशंस हैं प्रेसिपिटेशन मेजर किया जाता है। अब इसमें जो रेनफॉल है ये ग्राउंड सरफेस तक भी नहीं जा रही है, क्लाउड्स में वेरिएशंस भी हैं। तो जो रेडार से मेजरमेंट हो रहा है या रेडार से जो भी एनालिसिस हो रही है उसमें कुछ एरर्स हो सकते हैं। So to account for these errors, bias correction are needed. So proper bias correction methods are required to process this data precisely, and this data can be useful for the weather forecasting, but there are limitations like it's a bias corrected data, so we have to take precautions during the hydrological modeling. This data is not very appropriate for the hydrological modeling purposes. So this was about the satellite measurement of rainfall. Next is measurement of snow. So snow can be measured in form of depth or snow water equivalent. So to measure the depth of the snow, we use the snow stacks and snow board. And to measure the snow water equivalent, we use snow tube and snow gauges. तो ये जो स्नो स्टेक्स होते हैं इट्स लाइक ग्रेजुएटेड स्टाफ जो कि परमानेंटली इंस्टॉल्ड हैं स्नो फील्ड में, एंड इट कैन बी यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द स्नो। जैसे स्नो में इस इमेज में जैसे आप देख सकते हैं स्नो जैसे एक्यूमुलेट होता जाएगा इस स्टाफ में रीडिंग्स होंगी, उस रीडिंग्स के अकॉर्डिंग हम एनालाइज कर सकते हैं कि कितना स्नोफॉल हुआ है इन फॉर्म ऑफ डेप्थ। Another instrument is used to measure the depth of snow is snowboard. Snowboard is a nothing but it's a 40 centimeter to 40 centimeter square board. तो इसको इस बोर्ड को माउंट कर दिया जाता है स्नो फील्ड में, एंड अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस और as per our requirement we will measure the snow depth by taking the sample from the snowboard. We can calculate snow depth as well as snow water equivalent from the snowboard. Next one is snow water equivalent. What is snow water equivalent? Snow water equivalent is the depth of water that would be result from the melting of a unit of snow. So we have a depth of snow, then we can calculate snow water equivalent directly by this formula. This HF is the depth of snow, this one is the snow density, and this one is the density of the water. So snow density varies for the accumulated snow, and fresh snow. For the fresh snow it varies from
0.06 to 0.15 gram per centimeter cube, and on an average we consider it's 0.1 gram per centimeter cube. However, for the accumulated snow, its density of snow varies from zero point 0.4 to zero point 0.6 gram per centimeter cube, but it's very uncommon. So next is snow tube. स्नो ट्यूब इज नथिंग बट लाइक अ कोर सैम्पलर. जैसे कोर सैम्पलर को हम लोग पेनिट्रेट करते हैं अर्थ सरफेस में, सिमिलरली इन स्नो फील्ड द स्नो ट्यूब्स को इंसर्ट करते हैं. द डाया ऑफ द स्नो ट्यूब वेरीज फ्रॉम द 40 टू 90 mm, एंड इसे पेनिट्रेट किया जाता है स्नो में जब तक कि आपका ग्राउंड सरफेस ना आ जाए, एंड उसके बेसिस पे जो डाया है इसे कंसीडर करते हुए इससे कैलकुलेट कर सकते हैं स्नो वाटर इक्विवेलेंट. सो जो इसमें स्नो कलेक्ट होगा सैम्पलर में इस या ट्यूब में, इसे रूम टेम्परेचर में रख के या उसमें सम प्री मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ हॉट वाटर मिक्स करके स्नो वाटर इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया जा सकता है. सिमिलरली इन दी स्नो गेज इज सिमिलर टू दी रेन गेज. द डायामीटर रिसीवर का वो होगा 203 mm, एंड इसमें नीचे साइड में ये ट्यूब होगी जो जिसका डेप्थ या हाइट वेरी करेगा 60 mm टू सेवरल मीटर्स तक. मीन्स बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट कहाँ पे किस लेवल का स्नोफॉल हो रहा है उसके बेसिस पे स्नो गेज के साथ जो ट्यूब कनेक्टेड है इसे सिलेक्ट किया जाता है. एंड इसमें से सिमिलरली जैसे स्नो ट्यूब में जो स्नो कलेक्ट किया इसे इधर टेम्परेचर पे रख के मेल्ट किया, और इसमें प्री मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ हॉट वाटर मिक्स करके स्नो को मेल्ट किया, एंड मेल्टिंग के बाद उसका वे इधर वॉल्यूम कैलकुलेट किया या वेट कैलकुलेट किया. सिमिलरली स्नो गेज में भी जो स्नो एक्यूमुलेटेड है इसे रूम टेम्परेचर में या प्री मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ हॉट वाटर मिक्स करके स्नो वाटर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, either in volume or in weight. So it's all about the measurement of precipitation and the measurement of snow and measurement of rainfall. So thank you so much.